Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. I'm Ashish Bhargav and here is another episode of deep dive session. So in first we discuss about Biodiversity Act. Recently it has been amended and passed in the Lok Sabha by the Biodiversity Act. What are the pros and what is the cons and why India needed for such kind of act and what is the meaning of biodiversity, right, and what are the important takeaways for your exam. Everything in the detailed manner we discuss in this YouTube session. If you are new in this channel, please subscribe the channel as well and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. One more thing that I am telling you, that deep dive session is very important because any burning issues that we discuss in the deep dive session, the purpose to conduct such kind of YouTube session is that the student and aspirants would be very familiar to know about what is happening and what is the burning issue is talking about, right? So here we are, about current affairs. As we know, that is the best way about the current affairs to read the newspaper. So newspaper is the best source to knowing the current affairs. And just a second. And a little progress each day adds up to a big result. And here is an article of Indian Express. What is the Biodiversity Act? What changes has the Lok Sabha cleared in the law? So recently the Biological Diversity Amendment Bill was passed in the Lok Sabha on July 25th, bringing in a number of changes to over 20 years old Biological Biodiversity Act. We discuss the first thing, what is biodiversity, what is the nitty-gritty of the subject. Is biodiversity, what does it mean, what is the scenario, and what in the global level what is biodiversity is. And one more thing that we need to keep in mind, that what is Biological Diversity Act of 2002 and what are the changes has been done by the Lok Sabha. So before knowing the topic, we should know about the basic concept that what is biodiversity is. So we'll discuss first that what is biodiversity, and then we'll discuss about this topic in the detailed manner. So biodiversity in short, that is a variety of living organism on earth and the interaction between them. This includes the diversity of a species, ecosystem and genetic variation with the species. So biodiversity is important because it provides numerous benefits to humans, such as food, such as medicine and ecosystem service like pollination and water filtration, and it also plays a crucial role in maintaining the balance and resilience of ecosystem, which in turn supports the sustainability of human life. Now, however, we can see that biodiversity is currently threatened by various human activities, including habitat destruction, pollution and climate change. Conservation efforts are needed to protect the restored biodiversity and ensure the continued provision and its benefit to both human and as well as planet as a whole. So this is exactly mean the biodiversity. So what does it mean, the biodiversity? I told you in a short and simple lucid manners that it refers to the diversity among the living organism on earth, and it is the variability between the species with the species and between the ecosystem. Types of biodiversity: genetic, which is diversity with the species, and species diversities and ecosystem diversities. So here is diversity with species and here the diversity with ecosystem. Four of the world's 36 biodiversity hotspots are located in India. Make sure there are 36 biodiversity hotspots that is located in India, and around 4 are located in India. The Himalayas, Western Ghats, Indo-Burma area and Sundaland, the two of these, the Indo-Burma areas and Sundaland, are distributed throughout South Asia, are not precisely contained within India's formal borders. Then one is Himalayas, second in Northeast India, Andaman and Nicobar Island and Western Ghat. So they are Himalayas, Western Ghat, Northeast India and Andaman and Nicobar Island. So these are the biodiversity hotspot of India.
Now we talk about what is biodiversity. What is hotspot? Biodiversity hotspot is basically is a region which is a prime location for the existence of rich biodiversity, and but also faces the threat of destruction. One, we talk about Western Ghat as a chain of hills that run along the western edge of peninsular India. Peninsular, which means the three sides of water, three sides of water and one side of land, that is known to be a peninsular. Three side of water, one side is land. So Western Ghat जो है आपका is a chain of hills that run along the western edge of peninsular India, or these regions have most deciduous forest and rainforest. The region shows high species diversity as well as high level of endemism. उसके बाद आपका आता है ईस्टर्न हिमालयाज region encompassing Bhutan, northeast India, and southern central and eastern Nepal. Geologically young region with high altitude variation, have nearly 163 globally threatened species including the one horned rhinoceros. उसके बाद आपका द थर्ड एरिया आता है इंडो बर्मा का, includes entities नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया except Assam and Andaman group of island. So of the 13,500 vascular species found in Indo-Burma, 52% are endemic to the region, spread over 2 million square kilometer of tropical Asia with a wide diversity of climate and habitat pattern in this region. उसके बाद आता है आपका सुंदालैंड जो कवर करता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडो Malayan, includes Nicobar group of islands and Indonesia, Malaysia and Singapore. So बात करते हैं इसमें इंडिया को 10 बायोजियोग्राफिकल zones में डिवाइड किया गया है, and the image taken from the NCERT because the basic facts like Trans Himalayas, Himalaya, desert, semi-arid, Western Ghat, Deccan Peninsula and Gangetic Plains, coast, northeast and island. So उसके बाद है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जिसको अमेंड किया गया है. पहले हम उसको समझते हैं, उसमें अमेंडमेंट देखेंगे फिर क्या क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने प्लान किया. So Biological Diversity Act 2002 is in law meant to achieve three main objectives. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? The conservation of biodiversity, the sustainable use of biological resources, equity in sharing benefits from such use of resources. These three are, we can say, a main objective or to achieve in Biological Diversity Act. And क्या क्या मेन इसमें चीज़ें डिसाइड की गई थी? What was the things that it was decided? First thing, prohibition on transfer of Indian genetic material outside the country and without a specific approval of Indian government. Second one, that we can say that prohibition on anyone claiming an intellectual property right, which is called known to be IPR, such as patent over biodiversity or related knowledge without permission of the Indian government. Third one, we can say that regulation of collections and use of biodiversity by Indian nationals while exempting local communities from such restrictions. Fourth one, that we can say that measures of sharing of benefits from the use of biodiversity, including transfer of technology, monetary returns, joint research and developments, joint IPR, which is called intellectual property rights, etc. Fifth, हमारा like measure of conserve and sustainably use biological resources, including habitat and species protection, environmental impact assessment EIA, and project integration of biodiversity into plans, programs and policies. Triple P को आपको याद रखनी है. Triple P we need to remember, like one P stand for program, second P stand for plans, and third one is policies. सिक्स्थ है इसमें कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उसको क्या करना है, प्रोविज़न देना है. प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस और ट्रेडिशनल नॉलेज उसकी बात हो रही थी.
रेगुलेशन ऑफ द यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो GM क्रॉप्स होते हैं, लाइक उसकी बात हो रही थी इसमें। सेटिंग अप अ नेशनल, स्टेट और लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड्स की बात हो रही थी, जो इसमें स्टेट और नेशनल लेवल की फंड्स हैं, टू बी यूज टू सपोर्ट कंजर्वेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग। नेक्स्ट है सेटिंग अप बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी BMC एट अ लोकल विलेज लेवल, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड SBB एट a स्टेट लेवल एंड नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA। बात करते हैं CBD, जिसके बारे में बहुत बारी क्लैट ने आपको पूछा है इसके बारे में कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बेसिकली अगर बात करें इसमें, सो जस्ट अ सेकेंड, सो इट वाज साइंड इन 1992। So the convention is founded on the principle that local communities generate the dependent on biodiversity and should continue to benefit from it. इसको साइन किया गया 1992 में। CBD was signed in 1992 at 1992 UN Conference on Environment and Development (UNCED) in Rio de Janeiro, and that was entered into force on 29 December 1993. इसमें more than 170 countries हैं, and India became a signatory to the Convention of Biological Diversity (CBD) in 5th June of 1992. इसके 3 गोल थे जो मैंने आपको बता दिया CBD का: to promote the conservation of biodiversity, the sustainable use of its component, and fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of genetic resources. ये 3 गोल इसमें मेनली रखे गए थे। और जो इसका मेन स्ट्रक्चर था बायोडाइवर्सिटी एक्ट का 2002 का, ये आपको मेन याद रखनी है कि लाइक द फर्स्ट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स SBB एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये 3 बनानी थी उसके लिए। अब नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है सेक्शन 8, इसमें क्या है मेंशन किया हुआ, इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे, हु कैन बी ए मेंबर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसके मेंबर्स होंगे चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो 10 लोग होंगे, नॉन ऑफिशियल 5 पर्सन होंगे। चेयरपर्सन एक इंसान होगा, एक्स ऑफिशियो चेयर और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा इन सीतु और एक्स सीतु के बारे में। इन सीतु एंड एक्स सीतु, इसमें आते हैं आपको सेक्रेड ग्रुप्स एंड लेक्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और ये फिर इसमें टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसी में आता है आपका इन सेतु में। इसमें आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वी कैन फिजिकली टच इट, दैट इज हमारा इन सेतु है। एक्स सेतु का मतलब होता है सेक्रेड प्लांट्स, होम गार्डन, सीड बैंक, जीन बैंक, क्राइपो प्रिजर्वेशन, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल एंड गार्डन, ये सारे आपके होते हैं एक्स सेतु में। बात करते हैं कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, क्या क्या लोगों की इनिशिएटिव्स थे अभी तक गवर्नमेंट और लोगों ने लिया है इसके लिए। बीज बचाओ आंदोलन, हिमालय क्रॉप्स, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, ड्राईलैंड क्रॉप्स, सेवा, अंतरा, लोकहित, पशुपालक संस्थान, लाइव स्टॉक, अदर, नवदिन्या, ग्रीन फाउंडेशन, ADS एंड तिम्बुकी कलेक्टिव। अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हमारा मेन टॉपिक था क्या। आई होप इट वॉज़ वेरी क्लियर फॉर एवरीवन कि हमने क्या क्या इसमें चेंजेस देखे, उसका कुछ कुछ MCQ को हम सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ मेन हमारा क्या था कि हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में एंड क्या क्या चेंजेस लोकसभा ने अभी तक लिए हैं इसको चेंज करने के लिए। सो लोकसभा ऑन ट्यूजडे जुलाई 25 को गिव इट्स अप्रूवल टू बिल टू अमेंड सम प्रोविजन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में क्या है। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो था दैट सिक्स टू एड्रेस कंसर्न ऑफ सेवरल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट, researchers, industry and other stakeholders regarding the implementation of the 20 years old law that is meant to preserve and country biological diversity and to ensure a sustainable use। मतलब इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल में ये चीज़ मेंशन था कि लाइक जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इंडस्ट्री है और दूसरे स्टेक होल्डर्स, किनके रिगार्डिंग के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए 20 years ओल्ड लॉ को
जो मैंने आपको भी जस्ट बताया कि क्योंकि इसमें अमेंडमेंट को जानने के लिए आपको ये चीज़ें समझनी होगी, यू मस्ट नो अबाउट इट कि इसमें क्या क्या चेंजेस ली गई. Among other things, the amendments aim to encourage Indian system of medicine like Ayurveda, attract more foreign investment, and the preservation and commercial utilization of Indian biological resources, and simplify the streamlined processes so that it is easy for everyone to comply with this provision. So पहले हमें ये जानना है कि what is biodiversity law and why does India need one. तो आपको मैंने जस्ट देखा कि इसके लिए क्या थी, क्योंकि आपको अगर फॉरेस्ट लैंड को कंजर्व करना है तो आपको बायोडाइवर्सिटी एक्ट के ऊपर ध्यान देनी होगी. और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स करता है ऑल काइंड ऑफ फॉर्म्स लाइक एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो वी कैन इन शॉर्ट पहला आपका आ गया इसमें एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये 3 चीज़ें आ गई. एंड देयर जीन पूल्स एंड द इकोसिस्टम दैट दे इनहैबिटेड. सो इन 2002 में एक्ट वाज अ रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल नीड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विच आर अंडर थ्रेट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो 2002 में जो एक्ट वाज अ रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल नीड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विच आर अंडर थ्रेट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अभी बात चल रही है ऑन द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC के बारे में. देखो, सो द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज वाज हाईलाइट, जिसको क्या क्या डैमेज हुई है. अभी देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल भी पास किया गया है, राइट. So much later, in a landmark of 2019 report by the Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity और Ecosystem Services like IPBES, एक scientific body है which is similar to the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC पे काम करती है. This is not IPCC law वाला IPCC, this is similar to the full form is Intergovernmental Panel on Climate Change. एंड जो रिपोर्ट पास की गई, इशूड की गई, दैट वाज अ स्टार्क वार्निंग अबाउट 1 मिलियन एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज आउट ऑफ टोटल 8 मिलियन और फेसिंग अ थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन. देखो गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है, बिकॉज आपके अगर इकोसिस्टम जो आपकी इकोसिस्टम है अगर वो डिसरप्ट होती है तो देयर वुड बी डायरेक्ट इम्पैक्ट, देयर इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट दैट इम्बैलेंस टू द ह्यूमन बीइंग. दैट्स व्हाई this report is issued about 1 million animal and plant species out of total 8 million were facing a threat of extinction, and about 75% of the earth and land surface and 66% of the oceans had been significantly altered. और इस efforts में protection की बात हो गई है. क्या बात हो रही है कि to protect the biological diversity had begun much earlier. 1994 में countries including India has agreed to the Convention on Biological Diversity (CBD), an international framework agreement similar to the more famous one on climate change. So there were a general agreement on 3 things. पहला कि क्या that discriminate use of biological resources needed to be halted, that sustainable use of these resources for their medicinal properties, for example, needed to be regulated, and तीसरा that people and communities helping in protecting and maintaining these resources needed to be rewarded for their efforts. बाद में आपको मैंने बताया कि इसमें इंडिया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को इनैक्ट किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विथ दीज ऑब्जेक्टिव इन माइंड. पहला, इट सेट अप अ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एज अ रेगुलेटरी बॉडी and prescribe the condition in and purposes for which biological resources could be utilized, and the purposes mainly related to scientific research and commercial use. So why did the need for amendments for the law arise? Over the years, several stakeholders like those representing the Indian system of medicine, the seed sector, pharmaceutical and other industries, and the research community have pointed out that some of the provision of the 2002 law restricted their activities and thus
needed to be modified. In addition to that we can say countries agreed to the Nagoya Protocol in 2010, an important international agreement under the CBD, and that contained an access and benefit sharing mechanism. इस मैकेनिज्म के अंदर बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज जो हैं दैट नीडेड टू प्रोवाइड एक्सेस टू देयर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, और वो कंट्री जो चाहते हैं कि लाइक यूज़ इट फॉर द रिसर्च फॉर द कमर्शियल रीजन टू यूज़र एजेंसीज. In turn, that were mandated to share the benefits of their use and local communities. So over the last few years, the government too has been trying to encourage traditional system of medicine. मतलब जो हमारा अपना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और वी कैन से जो आयुर्वेदा है उसको हम, बिकॉज चाहे वो आपका डिफेंस के सेक्टर में हो, चाहे आपके वो आर्ट के सेक्टर में हो, गवर्नमेंट वांटेड टू प्रमोट द इंडिजिनस इंडस्ट्री. कौन सी इंडस्ट्री? indigenous industry. So the last few years the government too has been trying to encourage traditional system of medicine, all of which rely on these biological resources. So what amendments have been proposed in the biodiversity law? ये जो बिल पास हुआ इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए 2002 एक्ट में, एड्रेसिंग मोस्ट ऑफ द कंसर्न रेज्ड बाय द प्रैक्टिशनर ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, द सीड सेक्टर, द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ यूजर्स ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जैसे कि आपका लाइक प्रैक्टिशनर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिनको कि एग्जेम्प्ट किया गया फ्रॉम मेकिंग पेमेंट्स टुवर्ड द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म. कंपनीज रजिस्टर्ड भी इन इंडिया में एंड कंट्रोल्ड बाय इंडियंस आर नाउ ट्रीटेड एज अ इंडियन कंपनीज. जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड भी इंडिया में कंट्रोल करती है बाय इंडियंस, जिनका मेन ऑनरशिप इंडियन है, उसे कंट्रोल से क्या कंसिडर करेंगे? इंडियन कंपनीज. इवन दे हैव एन फॉरेन इक्विटी और पार्टनरशिप, thereby reducing the restriction on them. Our provision have been included to speed up the approval process in case of use of biological resources in scientific research for filing or patent applications. और आपको एक और इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में. द इंटरनेशनल डे ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी IDB that was celebrated on 22nd of May 2023 that raise awareness about the importance of biodiversity for sustaining life on earth, and the global assessment report on biodiversity and ecosystem services highlights the risk of extinction for around 1 million species. And now everything we have discussed, कि क्या क्या चेंजेस किए गए. नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी हाईलाइटेड अगेन, और आपको इसको डिस्कस करना है कि लाइक गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए थे. सो टू कंजर्व एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी, पहला पीपल इनिशिएटिव ये था, पीपल्स लोगों का इनिशिएटिव कि बीज बचाओ आंदोलन था, डेक्कन डेवलपमेंट, सेवा, यथार्थ, ये सारी चीज़ें थी. इसमें अगर आप देखो तो बीज बचाओ आंदोलन जो था, सेव द सीड मूवमेंट एंड BBA इज़ नॉट ओनली अ crusade to conserve traditional seed but also to promote agriculture and local tradition. Farmers और social activists जैसे विजय जरधारी ने रियलाइज़ किया modern agriculture that was destroying traditional farming crop yields on the high yielding varieties, तो वो भी इसमें mention थी. और the important one is that now we discuss there are few questions that is based on this. When did Biological Diversity Act 2002 came into force? So the right answer is option D, 1st October 2003. So recently we have discussed the Biological Diversity Act that was forced on 1st October 2003. Which act provides for setting up a National Biodiversity Authority (NBA)? Option A, Environmental Protection Act 1982, a Biodiversity Act 2002, Forest Convention Act 1980 and Wildlife Act 1972.
So it was Environmental Protection Act 1982 is the right answer, or B. So Biodiversity Act 2002. So this act provides for setting up a National Biodiversity Authority. The last one questions is, which of the following act was for the protection and improvement of environment? Environmental Protection Act 1982, Biodiversity Act 2002, Forest Convention Act 1980 and Wildlife Act 1972. So option A is the correct one, Environmental Protection Act 1982. A is the right answer. This one, Environmental Protection Act 1982. So this is all about the session, dear student, and I hope that you enjoyed the session a lot. Right, if you have any questions, please let me know in the comment section, and if you are new to this channel, please subscribe the channel as well, and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. So thank you so much for joining with us, and we'll meet you tomorrow at the same time tomorrow at the 4 p.m. for the entire week of MCQ that we will discuss tomorrow. Stay tuned. Till then, bye bye and take care.